So student, in this we will discuss about the joint diastole or complete cardiac diastole, means that portion. Okay, that portion. Now you can understand it here. Joint diastole or complete cardiac diastole is followed by ventricular. The ventricular systole is followed by ventricular diastole. सिस्टोल हो गया, श्रिंक हो गया, अब क्या होगा, रिलैक्स होगा. एज एट्रियाज आर ऑलरेडी इन डायस्टोल बिकॉज ब्लड इज प्रेजेंट इन वेंट्रिकल्स. पहले वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से मूव हो गया डिफरेंट पार्ट्स. ओके, देन नाउ दे आर इन श्रिंक कंडीशन. व्हाट विल डू, what they will do now, they will come in the relaxation mode. Okay, and this relaxation mode is known as the diastole. So due to ventricular diastole, pressure in ventricles decreases that in the great arteries. To prevent backflow of blood from great arteries to ventricle, the semilunar walls close rapidly. Okay, semilunar walls, please remember this thing, because these are the specialized areas which play an important role in the movement of systolic movement and in diastolic movement. So semilunar walls close rapidly to prevent backflow of blood. So during complete cardiac diastole, blood from the great veins flows into the arteries, atria. Gradually the pressure in the ventricles becomes lower than atrial pressure. Then the atriculoventricular walls open and blood from atria start entering into relaxing ventricles. So by this the whole cardiac diastole completed, and complete cardiac diastole takes place only 0.8 second. Okay, 0.4 second, and you know very well complete cycle is of 0.8 second. So we can understand it by this pic also. Just check it out. At first, atrial contract after stimulating of SA node, bicupsid and tricupsid valve. Atrioventricular valve are open and blood is forced into ventricle. We had discussed it already. एट्रियल से कहाँ आ गया, वेंट्रिकल में ब्लड आ गया. ओके, ड्यू टू द श्रिंकिंग और ड्यू टू द सिस्टोलिक मूवमेंट. देन वेंट्रिकल बिगिन टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेटेड बाय AV नोड. क्लोजर ऑफ AVV मीन्स atrioventricular valve produces first heart sound. Children, that is very important. जब AV नोड बंद होता है, that time one sound is produced and this sound is known as the lub. LUB, lub sound. Okay, first sound is lub sound. This is slightly low, and the other, it is known as the systolic sound or first heart sound, lub, LUB. Or the second one, you can see here now, the outflow of blood is very rapidly out of the ventricle into the first phase of ejection period. ventricle से अब पास होना शुरू हो गया बेटा. Next, the outflow of blood slow down in the second phase of ejection period, that is the period during which ventricle pour blood into pulmonary trunk and aorta. अब ventricle कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं बेटा, वेंट्रिकल कहाँ भेज रहे हैं, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी ट्रंक जो कहाँ ले जाएगा, लंग में, एंड द सेकेंड साइड फ्रॉम द एओर्टा. नाउ दिस इज नोन एज द वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया. नाउ द नेक्स्ट इज रिलैक्सेशन टाइम. This is the SLV close. Please remember, it is the protodiastolic period. रिलैक्सेशन पीरियड से पहले एक छोटा सा टाइम होता है. इट इज़ द इंटरवल बिटवीन द बिगनिंग ऑफ डायस्टोल एंड क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वॉल्स विच प्रोड्यूसेड सेकेंड हार्ट साउंड. जैसे ही डायस्टोल शुरू होता है बेटा, दैट इज नोन एज द डायस्टोलिक साउंड, एंड द सेकेंड साउंड इज नोन एज द डब. DUB या DUP एक ही बात है. ओके, डब साउंड और डायस्टोलिक साउंड और सेकेंड हार्ट साउंड. इट इज हार्ड ड्यूरिंग द बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड इज ड्यू टू द रैपिड क्लोजिंग ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व. जल्दी से सेमील्यूनर वॉल्व बंद होते हैं बेटा टू प्रिवेंट ब्लैक फ्लो. दैट्स वाई द डब साउंड इज लिटिल बिट हार्ड. ओके, नाउ ventricles relax. In the next step, you can see ventricle relax, intraventricular pressure falls below of the aorta, and AV walls are gets to be
open. ओके नाउ AV वॉल फिर से ओपन हो गया. एट्रियल ब्लड बिगिंस टू फ्लो इन वेंट्रिकल. द फर्स्ट पार्ट ऑफ फिलिंग इज वेरी रैपिड. नाउ द डायस्टेसिस और स्लो फिलिंग, इट इज द लास्ट फिलिंग phase during which ventricle filling is very slow. With the completion of this phase, ventricle diastole ends and atrial systole commence. Means रिलैक्सेशन टाइम में ब्लड पूरा भर गया, अब कॉन्ट्रैक्शन फिर से शुरू हो जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेयर अभी तक रिलैक्स थे बेटा, अब यहाँ से ब्लड फिलिंग शुरू हो गई. स्लो फिलिंग ऑफ ब्लड. फर्स्ट फिलिंग इज हाई, देन स्लो फिलिंग इज slow, that's why it's a slow filling. Okay, so I hope the complete cardiac cycle is clear. Means it start from auricular systole, it's last for 0.1 second, then ventricular systole, it last for 0.3 second, and complete cardiac diastole, it last for 0.4 second. Can you calculate this? So whole cardiac cycle complete in 0.8 seconds. I hope it is clear. If you have any query regarding this cardiac cycle, please send me and watch all the 3 parts, then you will get it. Thank you, children.